Hello, dear students. In this video, I will explain the first lesson, Silence Features of Indian Constitution. Dr. Baba Sahab Ambedkar was the Permanent Draft Committee Chairman of the Indian Constitution. Dr. Baba Sahab Ambedkar carefully the Indian traditional culture and Indian heterogeneous culture, and the India is multilinguistic, multi-caste, multicolor, multi-creed, multi-religion, etc. So the India Constitution is unique in its content and spirit, though borrowed from almost every constitution of the world. Constitution of India has several silence features. Now these are the following features it's as under. Number 1, written constitution and rigid constitution. The Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. It is very comprehensive, elaborate and detailed document. In 1949, the Constitution contained preamble, 22 parts, 395 articles and 9 schedules and 398 पेजेस. देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथी शक्ल में है, यानी एक ज़ख़ीम किताब की शक्ल में है, एक राइटिंग स्ट्रक्चर है. बट नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वेरी लेंथिंग अमंग द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़ख़ीम किताब जो है हमारे हिंदुस्तान के आहीन, हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर है. और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन स्ट्रक्चर यानी एक किताबी शक्ल में है. बट देयर बुक इज़ कंसिस्ट ऑन 398 पेजेस, 395 articles, 22 chapters and 9 schedule. Today, in 2019, there is preamble, 22 parts, more than 465 आर्टिकल. और आज की तारीख में हमारे टोटल आर्टिकल जो है 465 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 25 चैप्टर्स. Comparative American Constitution has 7 articles and Australia Constitution has 128 articles. Chinese Constitution has 138 articles. Canadian Constitution has 147 articles. No other constitution in the world has these many articles and schedule. और इस तरीके से पूरी दुनिया में देखा जाए तो हर एक जगह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपेयर ऑफ द इंडियन, बट नो शेड्यूल, नो चैप्टर, बट ओनली इन देयर शेड्यूल एंड चैप्टर्स इंक्लूड इन देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The reason behind the size of the constitution is the huge size of the nation, its diversity, geographical diversity. Government of India Act 1935 has great influence on the Constitution of India. देखिए ब्रिटिशर टू इंट्रोड्यूस ऑफ द 1935 आर्टिकल, बट 1935 आर्टिकल टू गिव द सपोर्ट ऑफ रोड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Dr. Baba Sahab Ambedkar the fully carefully and wrote that the our features but include in their article number 1935, and article number 1935 is the very great influence on the constitution of India, यानी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ. Union of India has a single constitution except that state of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has separate constitution. The state of Jammu and Kashmir has special status according to the article 370 of the Indian Constitution. और साथ में जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सेपरेट आर्टिकल लिखा गया, 370 article. But nowadays the BJP government took to abortion of their 370 article for the Jammu and Kashmir. And then second, written constitution, unwritten constitution, flexible means the type of the constitution.
कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड यानी बहुत ही सख्त कवानीन के साथ भी है, फ्लेक्सिबल यानी बहुत ही उसमें लचक दी गई है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे बाय डे, टाइम टू चेंज एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सम कॉन्स्टिट्यूशन सम लॉ वेरी इजीली flexible, very easily amendment, and some constitution some law very rigid amendment, यानी कुछ बहुत ही सख्त कवानीन है जो आसानी से तब्दील नहीं किए जा सकते, और कुछ जो है बहुत ही लचकदार हैं जिसको आसानी से तरमीम किया जा सकता है। तो सो कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। In the constitution, like America has complicated procedure for its amendment, hence it has rigid constitution. On the other hand, flexible constitution can be amended with simple procedure. For example, Britain. The Indian constitution is neither rigid or flexible, but sentence of both. Article 368 provides for the amendment with special majority and ratification by more than half of the state। देखिए हमको अमेंडमेंट के 3 तरीके दिए गए हैं, बट नाउ द सम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय द 3 टाइप्स। फॉर द सिंपल मेजॉरिटी, नंबर 1 बाय द सिंपल मेजॉरिटी, नंबर 2 बाय द रूलिंग मेजॉरिटी, एंड नंबर 3 बाय द स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। So the 3 types of amendment in the constitution, the very easily and the very rigid of the Indian constitution. Constitution are also classified as federal or unitary, and article number 2 declared that India is federal. Federal means the power is classified from the both block, center between state government, union between regional government. But our constitution, हमारे हिंदुस्तान के आहीन में ये लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 2 प्रोवाइड ऑफ द इंडिया इज फेडरल। फेडरल मीन्स द पावर डिवाइडेड बिटवीन बोथ पार्ट। तो इस तरीके से हमारा पावर जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान तकसीम किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट और इलाकाई गवर्नमेंट के दरमियान तकसीम किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज फेडरल और यूनिटरी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल ब्रिटिश एंड चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन आर यूनिटरी। is unitary constitution, all the power is concentrated in the central government। यानी इसका मतलब कि तमाम पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, और फिर उसके बाद जो है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल अदर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर्क एज द एजेंट्स of the center। Written in flexible constitution is most important part of the federal government। Power distribute into central government, state government and local bodies। If conflict arise between them, there is a need for independent judiciary। लेकिन इसके अलावा हमारा जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस एंड जस्टिसिएबल, यानी हमारा अदलिया जो है वो आज़ाद है, और उसके अलावा जहाँ पर हमें इंसाफ दिया जाता है। नंबर 3 पार्लियामेंट्री सिस्टम। And the Constitution of India adopted for the British parliamentary system rather than American presidential system of government. Our Dr. Baba Sahab Ambedkar wrote that outstanding features of parliamentary form of government. And parliamentary form of government, 3 organs are very important: legislature, executive and judiciary, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुकन्नना, अदलिया, आमला। एंड लेजिस्लेचर मीन्स हायर लॉ मेकिंग बॉडी, जहाँ पे हमारा कानून तरतीब दिया जाता है, जहाँ पर हमारी कानून साजी होती है। लेजिस्लेचर इज कंसिस्ट ऑन बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोट ऑफ पीपल, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And Rajya Sabha is upper house of the parliament and Lok Sabha is the lower house of the parliament. So the
executive, and our executive is two type executive, and two type executive adopted by the pattern of England country. And the executive is two type executive, real head and nominal head. Real head is the Prime Minister of India, and there are directly elected representatives, adult franchise by the vote of people, and nominal head appointed by the elected by the member of Lok Sabha, by the member of Rajya Sabha, by the member of Vidhan Sabha, by the member of Vidhan Parishad, electoral college system. Now executive means to administrate, to managed over the control of the government, यानी जो हमारे हुकूमत को कंट्रोल करती है, हमारे हुकूमत के नज़्म ज़ब्त को संभालती है. एंड देन आफ्टर जुडिशियरी is the third important organs of parliamentary form of government, and judiciary is independence and justiciable, जहाँ पे हमको इंसाफ दिया जाता है, जहाँ पे हमको, but judiciary is not elected body, it is the appointed body. And the Constitution of India adopted for the British parliamentary system rather than American presidential system of government. The parliamentary system is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organ, while the presidential system is based on the doctrine of separation of power between two organs. The parliamentary system is also known as Westminster model of government. British Parliament is situated at Westminster in London. We also call it responsible government and cabinet government. Indian Constitution has established a parliamentary system not only at the union but also the state level. Formation of executive rule of majority party, executive collective responsibility towards parliament ministers being member of parliament, this factor created unique identity of Indian parliament system. And number 5, adult franchise. And adult franchise, the another features of Indian Constitution. And every citizen of India completed the 18-year age. But our Constitution to give the grant and to provide of the power right to vote for the every citizen of India. The basic of don't discriminations between caste, color, creed, race, religion, and don't discriminations between man and woman, don't discriminations between rich and poor, don't discriminations between upper and lower. But now the every citizen of India completed the 18-year age. Our Constitution to provide of the right to vote says that adult franchise. And single citizenship. Single citizenship is outstanding features of Indian Constitution. Though the Indian Constitution is federal in visage dual polity, it provides for only single citizenship, that is the Indian citizenship. In countries like USA, dual citizenship is seen. In Indian, all the citizens, irrespective of state in which they are born, enjoy the same political and civil right of citizenship all over the country, and no discrimination made between them except cases like tribal areas or the state of Jammu and Kashmir. Part 2, Article 5 to 11 mention the citizen of India. देखिए हमारा ये कंसेप्ट जो है सिटीजनशिप वो अमेरिका पैटर्न से लिया गया है, बट अमेरिका इज अडॉप्टेड ऑफ द डबल सिटीजनशिप वाइल इंडियन इज अडॉप्टेड ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप. Every citizen of India born in every corner of the
इंडिया एनी साइड ऑफ द इंडिया, यानी हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा होता है, किसी भी साइड में, किसी भी स्टेट में पैदा होता है, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द आइडेंटिटी एंड नेशनलिटी ऑफ इंडियन, यानी हमारी सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप, बट नाउ सेज दैट इंडियन सिटीजनशिप, Indian nationality Indian. So while America is double citizenship, for example, यानी जो आदमी वाशिंगटन में पैदा होता है उसकी वाशिंगटन की सिटीजन होती है, जो न्यूयॉर्क में पैदा होता है उसकी न्यूयॉर्क की होती है, तो so as well as the citizenship. Okay, thank you very much. Thanks a lot.